So in today's analysis video, let's start with the analysis of the newspapers for 20th of May 2023. So regarding the Hindenburg case, which is obviously in relation to the Adani group of companies. So expert panel clears SEBI. So SEBI, it has drawn a blank in its probe into the ownership and the opaque structures of 13 overseas entities, says the Supreme Court appointed panel, and regulator has sought more time to complete its investigation. So that is the update, and trying to understand key panels key findings kya rahi. So after 2 months of investigation, committee which was headed by Justice A.M. Sabre finds no conclusive evidence. So अभी के लिए मतलब ऐसा कुछ मेजर एक्शन नहीं लिया जा सकता या फिर ऐसा कोई बेसिकली कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है जो एलिगेशंस लगाए थे बाय द हिंडनबर्ग ग्रुप ऑन द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज कि उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशंस करी हैं एंड जो फाइलिंग से रिलेटेड कुछ और एज पर देम कुछ डिस्क्रिपेंसी एंड इश्यूज थे, बट अभी उससे रिगार्डिंग कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है आफ्टर 2 months ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज पर दिस पैनल. And going by the minimum public shareholding, so SEBI, it has been suspecting ki 13 overseas entities hai of having links to the Adani Group promoters, but the market regulator had not been able to make out a case. So it's suspicions, it cannot be confirmed unless more investigation is done. तो इसलिए SEBI ने थोड़ा और टाइम मांगा है कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा और टाइम दीजिए. एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है इट रेफर्स टू ओवर 6,000 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. कमिटी ने बोला है कि सेबी इट इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग दिस मैटर ऑल्सो. एंड जहां तक की प्राइस मैनिपुलेशंस की बात है तो कोई एविडेंस कोई ऐसा पैटर्न भी नहीं मिला है ऑफ मैनिपुलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द प्राइस राइज ऑफ द शेयर्स दैट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू एनी सिंगल एंटिटी और अ ग्रुप. तो अभी कोई ऐसा मेजर एविडेंस हमें नहीं मिला है. सो दैट इज the situation right now. So RBI is going to pull out rupees 2,000 notes from the active circulation. So यहाँ पे जो different measures of money होते हैं M1, M2, M3, M4 वो आपको पता होना important है from the examination perspective. Then RBI की clean note policy क्या है, that is important. So RBI ने decide किया है कि it will be withdrawing rupees 2,000 denomination banknotes from circulation in pursuance of its clean note policy. So clean note policy के under ये decision लिया गया है by the RBI. But जो rupees 2,000 notes है, they will continue to be the legal tender. So similar withdrawal of notes from circulation, it was undertaken even in 2013-14 also. ऐसा पहले भी किया गया है. So as in the days after demonetization की अगर हम बात करें, the decision to withdraw rupees 2,000 notes, it is likely to strain the system besides creating anxiety and inconvenience to the public. Definitely people would have to go through some inconvenience and problems. So central bank has advised the public to deposit the rupees 2,000 notes into their bank accounts, or you can get them exchanged from a bank for in other denominated notes. So 2,000 rupees के जितना भी आपके पास cash है, you can get it exchanged from any bank branch. बट अभी ये लीगल टेंडर रहने वाले हैं एंड जो टाइम लिमिट दी गई है दैट इज अप टिल 30th of September. एंड दिस इज नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नोट्स को सर्कुलेशन से निकालने के लिए ऐसा कोई पहला मेजर लिया गया है. हिस्ट्री में भी 2013-14 के टाइम पे भी ऐसा मेजर लिया गया था, बट ऑब्वियसली वो 2000 के नोट में नहीं था. There was some other denomination. So we'll take this further. We have more information on page number 12. Then in this picture, you can see all the G7 leaders, they are laying wreaths at Hiroshima Peace Memorial Park. So G7 summit is going to be there in Japan, and members of the bloc meeting in the Japanese city said that they would move to further restrict the Russia's access to G7 economies to starve Russia's war machine. So यहाँ पे भी basically main focus Russia के ऊपर ही है. So सेंटर ने रिजर्व किया है सुप्रीम कोर्ट का order. It reserves the Supreme Court order and gives LG the final say on bureaucrats. So Union government, it brought an ordinance designating LG as the administrator of Delhi with the final say on the postings and transfers of all the bureaucrats जो Delhi government में serve कर रहे हैं. So this ordinance promulgated by the president
seeks to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act of 1991 and it effectively negates जो अभी recently Supreme Court की judgment आई थी जिसने बोला हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इट upheld कि जो केजरीवाल लेड आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है इन दिल्ली उसको ज्यादा पावर दी गई थी जब अब बात आती है कंट्रोल या फाइनल से ओवर द ब्यूरोक्रेट्स एंड इवन टू द पावर टू मेक द लॉज आल्सो सो इससे मतलब बेसिकली इसको काउंटर करने के लिए नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द ऑर्डिनेंस सो एज पर दैट ऑर्डिनेंस इट इज सेइंग कि जो फाइनल पावर जो फाइनल से रहेगी फाइनल डिसीजन वुड बी दैट ऑफ एलजी So how Gujarat is working to become India's green hydrogen hub. So green hydrogen से related जो mission भी है वो भी important है and green hydrogen को किस process के through produce किया जाता है वो science वो chemistry इसके पीछे बहुत important हो जाती है तो green super power hydrogen that is produced through renewable और non fossil sources उसको हम green hydrogen बोलते हैं क्योंकि उसमें जो greenhouse gas emissions हैं they are zero and expected to help decarbonize the energy intensive industries like fertilizers, steel, chemicals, and petroleum. So वहाँ green hydrogen would be helping in decarbonizing of these industries. Then Gujarat, it has the aim to produce around 8 lakh tons of green hydrogen per annum by 2035. And this is the amount of land that has been allotted for green hydrogen schemes in the state and rupees 10 lakh crores worth of investment that is expected in the state over the next 15 years. So majorly two players, Reliance Group and Adani Group, would be taking the lead. So under the nationally determined contributions, India, it has set a target of becoming a net zero emissions country by 2070. And we also have an aim to reduce the carbon emissions by 45% by 2030 and by sourcing 50% of its energy from the renewable sources. So these are few targets. And apart from that, any company which is intending to set up a green hydrogen plant in Gujarat should have prior experience in producing at least 500 megawatts of renewable energy or should be a user of green or blue. So these are different types of hydrogen. So आपको इनके बीच में difference पता होना बहुत important है. Green hydrogen, blue hydrogen and brown hydrogen. So marriages, they can be solemnized online. So online marriages are now possible and legitimate as per the Kerala High Court. So जब सब कुछ online जा रहा है तो even why not marriages? So the bench, while answering a reference which was made by the single judge, observed that the Special Marriage Act, it should be construed with time in the light of Information Technology Act of 2000 as well. So Section 6 of this act recognized the use of electronic records in the government and its agencies. So video conferencing ke through marriage is possible under this Special Marriage Act only. Coming to the editorial page, so it's all about Karnataka. Not going to this article, change for the better shifting of Rijiju from the Union Law Ministry should end the conflict with the judiciary. So ये जो collegium system के ऊपर पूरा debate चल रहा था between the Union Law Minister and the judiciary. So it is saying कि this would come to an end. And
ये डिबेट हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. द ऑब्जेक्टिव डिबेट इज मच इम्पोर्टेंट, नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दिस मैटर. Taking SDG progress the Bhopal way. So Bhopal case study or Bhopal model for SDG, it can be cited in the answers. So Bhopal, it has become the first city in India to join the growing global movement on localization and sustainable development goals following the release of its voluntary local review. So 2015 में 193 member states of United Nations adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development. And isme there are total 17 SDG goals are there, 169 other targets as a plan of action for the people, for the planet and prosperity. So resolution ये specify कर रहा है कि क्या mechanisms रहेंगे for monitoring, review and reporting of the progress as a measure of accountability towards the people. So इंडिया की प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, so India, it has made commendable efforts towards the adoption, localization and achievement of the SDGs. These are the keywords. So नीति आयोग ने present किया था India's second VNR at the HLPF, which was convened in 2020. So it is, मतलब, if you like want to go by the full form, VNR is the Voluntary National Review and HLPF is the UN's high level political forum. वो recently 2022 में हुई थी. तो नीति आयोग ने on behalf of India proper data present किया था. So India's Ministry of Statistics and Program Implementation ने publish किया था National Indicator Framework for the review and monitoring of the SDGs. So India का जो unique development journey है, definitely जो हमारी journey रही है, that has been unique. And as per Niti Aayog report, at least 23 states and union territories, they have prepared a vision document based on the SDGs. So एक vision document होना, proper plan होगा ना कि how we'll be moving forward. Obviously, that's very important when it comes to achieving your targets. So almost all of them, they have initiated steps to localize these SDGs. So cities, they are the most important stakeholders in Agenda 2030, as at least 65 of the cities जो हैं, 65% of the 169 targets जो हैं, they could not possibly be achieved without the engagement of local urban stakeholders. So जो SDG के जो targets हैं, उनमें से 65% ऐसे टारगेट्स हैं जहाँ पे लोकल अर्बन स्टेक होल्डर्स की प्रेजेंट, उनका पार्टिसिपेशन एंड एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So it is desirable to align a city's VLR to the state level action plan where it is like available. Obviously, every state does not have their own action plan and जो country का VNR है, so obviously जो city का VLR होगी report, that needs to be in alignment with these two things. So that would be like making things much more smoother and easier. भोपाल प्लान की बात करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो अगर भोपाल के VLR की बात करें, तो भोपाल VLR इज द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन दी Bhopal Municipal Corporation, UN Habitat and a collective of over 23 local stakeholders. So पहले important point हो गया कि collaboration बहुत important है between different stakeholders. Then it has mapped 56 developmental projects to the SDG across 3 pillars. So जो SDG goals हैं उनको भी भोपाल ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया या 3 पिलर्स में कैटेगराइज कर दिया. फर्स्ट इज द गोल्स विच आर सेंटर अराउंड पीपल्स वेलफेयर. दूसरा जो प्लैनेट से मतलब which are related to planet. Third is which are related to prosperity. So these are 3 main categories जो भोपाल ने बनाई हैं एंड अकॉर्डिंगली SDGs को भी इन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया. सो सबसे पहले लाइक आपको ये भी पता होना चाहिए सारे 17 SDGs गोल्स मतलब कौन कौन सा गोल किससे रिलेटेड है. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेजिलियंस इमर्ज एज अ प्रायोरिटी फॉर द सिटी from the number of projects which are mapped to SDG. So first हमने देखा कि collaboration is very important between different stakeholders. Next we saw कि भोपाल ने उनको 3 different categories में divide कर दिया है. उसके अलावा basic infrastructure and resilience पे काम करना is again a priority and that needs to be the same for the pan-India level also. So the in-depth quantitative assessment of the city level indicators under SDG 11 records Bhopal's stellar performance in the solid waste management practices, public transportation, and open spaces per capita. So in 3 areas में
भोपाल ने बहुत अमेजिंगली परफॉर्म किया है. But if we go by the analysis, that is also pointing towards the areas where the city needs to work much more harder in the coming years to close the distance from the goals. So as per the analysis, obviously analysis के बाद ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी performance बहुत अच्छी रही, कहाँ पे you are lacking and more needs to be done. So analysis becomes very very important. So जो mayor हैं recognize the significance of a VLR for the city and led the efforts to engage people as part of the process. So people's participation, again, very important. So this was one of the case study regarding SDGs from India, that is the Bhopal's plan. So it's a remarkable opportunity for Indian cities to tell their stories in their own vocabulary. Obviously, हर city की different story होने वाली है, different journey होने वाली है when it comes to achieving the SDG at the local level. So using this framework of their choice to forefront their work at the global platform. So definitely it's an opportunity for each and every city. So we hope that more cities, they will follow the Bhopal's lead to showcase the urban innovations and collaborations emerging from India on the global map. तो ज्ञानवापी मॉस्क में जो शिवलिंग मिली थी उसके लिए साइंटिफिक सर्वे के लिए ऑर्डर्स दिए गए थे कार्बन डेटिंग से रिगार्डिंग, बट सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द टाइम बिंग इट हैज डेफर्ड द साइंटिफिक सर्वे ऑन शिवलिंग एट द ज्ञानवापी मॉस्क. सो सेंटर एंड जो यूपी गवर्नमेंट है दे अग्री टू द प्ली फॉर adjourning the survey of the disputed structure. Solicitor General Tushar Mehta raises concern that the exercise it may cause some damage to it. So because of these concerns, the survey and carbon dating exercise it has been stopped for the time being. And now basically कि और क्या safer alternatives हैं, so we can like shift to that instead of relying on carbon dating. So Supreme Court is now back to its full strength of 34 judges as CJI administers the oath to 2 new judges. So it's at now full capacity, and you can see in the pictures CJI is administering the oath to one of the new judges. So you need to know कि proper like judges को appoint करने का क्या process होता है, removal of judges के लिए क्या process होता है, that is important. So independence of Supreme Court is integral to the rule of law. यहाँ पे अगर हम बोले independence of judiciary, definitely that would be also true when we say that independence of judiciary is also integral to the rule of law. So it's not very difficult for a nation which is a democracy having a constitution to slip into chaos, into just the opposite of democracy. So even like वो भी बहुत easily possible है. ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई डेमोक्रेसी है, कोई कंट्री विच इज अ डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे लॉ वायलेशन नहीं हो सकता या रूल ऑफ लॉ मतलब वायलेट नहीं किया जाना पॉसिबल, तो ऐसा इट इज नॉट देयर. So even limited amount of arsenic exposure, it can mar your cognitive ability as per a study. So मतलब बहुत ज्यादा exposure तो भूल जाओ, यहाँ पे limited arsenic exposure is also very dangerous for the health. So it caused a reduction in the gray matter in the brain and affected the concentration in the children and the young adults who worked with like researchers. They worked with around 1014 participants from 5 regions across India. So it was found out कि जो gray matter है in the brain and जो concentration level skills हैं, that is highly affected if you have even minute level of arsenic exposure. So arsenic exposure कैसे हो सकता है, क्या sources हैं, that is important for us to know. And then यहाँ पे chronic exposure लिखा है to arsenic, it could be creating a silent pandemic affecting large portions of the global population. So though it is like well known that ingesting high levels of arsenic from the contaminated groundwater in India, it has been linked to a range of ailments. And as per this recent study, it suggests that even low levels of arsenic consumption, it may impact the cognitive function in children, adolescents, and young adults. So first is groundwater contamination, जहाँ से arsenic goes inside our body. बाकी आप थोड़ा सा search कर सकते हो so that you'll get much more useful information.
On the global page, on the world page, here we see Russia bans the entry of 500 US nationals, including Barack Obama. So जो sanctions लगाए जा रहे हैं वो ये मतलब एक्शन रिएक्शन हो रहा है. So European Union top official wants more scrutiny on Indian products which are derived from the Russian oil. So ये इशू हमने पहले भी देखा था जो यूरोपियन यूनियन रेज कर रहा है अगेंस्ट इंडिया कि इंडिया इट इज वायलेटिंग द सैंक्शंस जो रशिया के ऊपर लगाए गए हैं बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू बाइंग द क्रूड ऑयल. क्योंकि जो क्रूड ऑयल हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें और वैल्यू एडिशन करके वी आर सेंडिंग इट टू द यूरोपियन कंट्री. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिशियल है दे आर सेइंग कि उसमें लाइक दे नीड मच मोर स्क्रूटनी. On the business page, tax waived on annual forex spends up to rupees 7 lakh. So ये जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं ये 2 दिन से हम देख रहे हैं कि क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्पेंड्स जो आप करोगे एक्सीडिंग द लिमिट they are going to be the part of the liberalized remittance scheme and they will be attracting 20% tax from 1st of July. So rollback follows furor over the proposed levy among the taxpayer. So finance minister said कि tax collection at source it will not apply to the small transactions under the liberalized remittance scheme. So जो small transaction अब small transactions की limit आपको पता होनी चाहिए कि कितना अमाउंट स्पेंड करोगे तो आपके लिए वो स्मॉल ट्रांजैक्शन माना जाएगा. सो जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियल टीसीएस ट्रीटमेंट है फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ टू आल्सो कंटिन्यू. सो दैट वुड कंटिन्यू फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर. ओवरसीज पेमेंट्स अप टू ₹7 lakh a year for education and health they are permitted with a tax collected at source at the rate of 5%. So health and education sector के लिए different tax rate रहेगा up to the limit of ₹7 lakh. And ministry says कि जो rollback head is like rollback being done is to remove any procedural ambiguity. So RBI triples the dividend to pay around ₹87,000 crore rupees as surplus to the government. So कुछ amount of surplus है जो RBI को government को देना होता है. So ये dividend इसको dividend बोलते हैं and इसका जो amount है that is somewhere around tripled. So this is what it is saying. So the board, it like had a meeting in Bombay and so they reviewed the global and the domestic economic situation and जो बाकी associated challenges है with that, including the impact of the current global geopolitical developments. So all that was assessed and जो dividend था वो announce किया गया. Coming to Financial Express newspaper. So here we have seen कि क्या changes किए गए हैं regarding the circulation of ₹2,000 notes. So they're going to be withdrawn. So जो nitty gritties हैं वो हमारे लिए जानना important है. So exchange window जो open हो जाएगी from 23rd of May, it will be valid till 30th of September. And ₹2,000, it will be a legal tender. And exchange of notes, it can be made up to a limit of ₹20,000 at a time at any bank. तो ऐसा नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है सिर्फ आप उसके थ्रू पैसा एक्सचेंज करा सकते हो. किसी भी बैंक की ब्रांच से आप पैसा एक्सचेंज करा सकते हो बट लिमिट जो है दैट इज ₹20,000 at a time. And जो ₹2,000 बैंक नोट्स है it was like introduced obviously जब demonetization हुई November 2016 में. So ₹2,000 and new ₹500 notes they were introduced back then. अगेन ये आरबीआई का जो सरप्लस ट्रांसफर है डिविडेंड जो ट्रांसफर करेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे इसका ट्रेंड को अगर हम समझे तो 2021 फाइनेंशियल ईयर में इट वाज ₹57,000 crore. 22 में it was 99,000, 23 में 30,000 and now compared to this 30,000 level it is now triple to
87,000 around in the current financial year. तो इसमें भी हम नहीं बोल सकते कोई एक यूनिफॉर्म ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है. सो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए, एंड द ट्रांसफर इट इज आफ्टर कीपिंग contingency risk buffer at 6%, or we can say midpoint of the band which is mandated under the revised economic capital framework. So it is enabled by a rise in the gross dollar sales and lower provisioning requirements in 2022-23. So ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से जो डिविडेंड का अमाउंट है दैट इज बीन हायर दिस टाइम, कि जो हमारे ग्रॉस डॉलर सेल्स हुई उसमें इंक्रीज देखने को मिला, एंड जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स थी वो भी कम रही, तो इसलिए डिविडेंड जो आया फाइनली इट इज बीन 3 times higher. So government softens the angel tax blow. So liberal exemptions and easier valuation norms. So new norms की बात करें तो tax experts and investment intermediaries they have welcomed the dilution of the angel tax. Angel tax एक तो आपको पता होना चाहिए कि definition क्या है, and ये मैं बहुत बार पहले repeat कर चुकी हूँ, so you can just find out about the definition अगर आपको नहीं पता है. उसके अलावा safe harbor of 10% variation एक नई डेवलपमेंट है अंडर द लाइक न्यू नॉर्म्स. सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे exempted a broad set of foreign investors including almost all the public funds, banks and insurers from the ambit of the so-called angel tax. So जो exemption में आते हैं that includes now the foreign investors, all the public funds, banks and insurers. So उनके ऊपर angel tax नहीं लगाया जाएगा. It also widened the scope of the valuation of unlisted shares, which will make it easier for the Indian firms to justify the premium received by them while issuing shares to the foreign equity investors. So explainer section maybe it is talking about the withdrawal of rupees 2000 note. So RBI on Friday withdrew rupees 2000 notes from circulation even as it maintained ki note it will continue to be the legal tender. RBI however it has urged the public कि आप जो भी आपके पास 2000 के नोट है उनको एक्सचेंज कराए या डिपॉजिट कराए before 30th of September. So here we'll understand some of the frequently asked questions regarding this change. So ये डिसीजन आरबीआई ने क्यों लिया है कि जो रुपीज 2000 नोट्स हैं उसको आप सर्कुलेशन में से completely withdraw कर रहे हो. So हमने देखा कि 2000 rupee note was introduced in November 2016 under the relevant provisions of the RBI Act, primarily to quickly meet the need of the legal tender after जो demonetization का decision लिया गया. So objective being fulfilled. So जो objectives था उस time पे behind introducing rupees 2000 note, now RBI feels it has been fulfilled, and with the availability of banknotes in other denominations, they are in adequate quantities. So printing of 2000 rupee banknotes, it was stopped in 2018-19. So printing तो 2018-19 में stop कर दी गई थी. So majority of these notes, they were issued prior to March 2017 and they are at the end of their estimated lifespan of 4 to 5 years. So एक short term measure था. So it has also been introduced कि ये डिनोमिनेशन जो है इट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस. इतना ज़्यादा हम नहीं यूज़ करते हैं. स्पेसिफिकली अगर हम आम आदमी की बात करें तो वो रेयरली यूज़ करते हैं, रेयरली उनके पास सर्कुलेशन में भी आता है जब सर्कुलेशन ऑलरेडी अभी इतना ज़्यादा हाई नहीं चल रहा है. फर्दर जो स्टॉक है बैंक नोट्स का इन अदर डिनोमिनेशंस दैट कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट्स. सो इससे कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आ रही है. So value of rupees 2000 rupee notes in the economy अगर हम देखें तो you can see कि gradually it started to decline year by year, and 2000 rupee notes as a percentage of total bank notes अगर हम देखें तो you can see कि downward trend रहा है. That is a gradual downward trend. जब 2016 में इनको issue किया गया उसके बाद एक बार भी ये upward नहीं move हुआ है. सो क्लीन नोट पॉलिसी क्या है आरबीआई की? सो क्योंकि इस पॉलिसी के अंडर ही ये डिसीजन लिया गया है. सो द आरबीआई रिलीज आल्सो साइट्स कि सेंट्रल बैंक की जो क्लीन नोट पॉलिसी है दिस इज द रीजन बिहाइंड जो भी डिसीजन लिया गया है टू विदड्रॉ रुपीज 2000 नोट्स फ्रॉम द सर्कुलेशन.
सो ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 1999 में, अंडर विच बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, like installation of the currency verification and processing systems, starting with 9 issue offices before expanding it to all issue offices. And with these systems in place, जो disposal capacity है, to get rid of the soiled notes that increased considerably. So जो disposal capacity है वो with time increase हुई, and other steps they were also taken, like issuing of directives to all the banks prohibiting the stapling of banknotes and the stapling of the banknotes, and to issue only clean notes to the public. So legal tender, but the rupees 2000 banknote, it will continue to maintain its legal tender status. RBI has said this thing, and it can be used for normal transactions and receipts. So जो time limit दे रखी है 30th September, तब तक आप इसको as a legal tender use कर सकते हो. Banknotes, they can even be deposited in the holder's bank accounts also, and amount later withdrawn in other denominations. So central bank ने बोला कि it is encouraging the members of the public to deposit or exchange the banknotes before 30th of September at all the bank branches, starting from 23rd of May. So 23rd of May se you can start exchanging these notes. So this facility would also be available at the 19 regional offices of the RBI having issue departments. So will the rupees 2000 note, it will become defunct after 30th of September. So यहाँ पे हमें और clarity चाहिए. This is where further clarity it is needed from the RBI. But अगर मैं अपने logic से जाऊं कि अगर like main target RBI का क्या है कि rupees 2000 नोट को completely circulation में से वो withdraw करना चाहते हैं. अगर 30th of September के बाद भी वो legal tender रहेगा तो rupees 2000 नोट तो वापस circulation में आ जाएगा ना. तो according to me 30th of September के बाद it shouldn't be the legal tender money. बट इस पे अभी फ्रॉम दी आरबीआई हमें और क्लैरिटी चाहिए. सो इस पे अभी कुछ नहीं बोला गया. सो न्यूज एजेंसीज एएनआई सेज कि द नोट इट विल रिमेन लीगल टेंडर इवन आफ्टर 30th of September. बट 30th of September के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा तो जिनके पास ब्लैक मनी है उनके ऊपर टारगेट करने का क्या फायदा. वो तो फिर आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर 30th of September के बाद भी रुपीज 2000 नोट्स लीगल टेंडर रहेंगे तो जो अभी स्टेप लिया जा रहा है उसका क्या बेनिफिट हुआ. So RBI thinks कि 4 months they will be enough to exchange the notes, and this is routine exchange of the RBI and people they need not panic. So अभी के लिए हमारे पास यही update है from RBI. So that's all from this newspaper. Coming to Indian Express newspaper, so again यहाँ पे बहुत बात कर चुके हैं, सेम चीज यहाँ पे रिपीटेड है. सो ये हम ऑलरेडी लाइक सारा डिस्कस कर चुके हैं. प्राइम मिनिस्टर इन हिरोशिमा, जापान से भी ड्रॉज अ ब्लैंक इन द अडानी प्रॉब. सो यहाँ पे भी कुछ सब्सटैंशियल फाइंडिंग नहीं मिली है. देयर इज नो अब्यूजिव ट्रेडिंग, देयर इज बीन फाउंड, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है. एंड जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात हुई, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. तो स्टबल बर्निंग के इंस्टेंसेस स्पेसिफिकली पंजाब स्टेट का यहाँ डेटा दे रखा है. तो विद टाइम वी आर सीइंग यहाँ पे 19th of May से 16th of May से 16th of May के बाद इट इज बीन डिक्लाइनिंग. यस इट इज एज पर द डेट. सो इंस्टेंसेस जो है वो हमें डिक्लाइन होते दिख रहे हैं. यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास डेटा दे रखा है. So last 4 days में total instances of stubble burning that were reported were 1533. And till 19th of May, it was around 10,780 such instances. So definitely it's a problem. कोई permanent solution अभी तक हमें नहीं मिला, which is permanent also, which is economically reliable as well. तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला. Explain section में फिर से rupees 2000 notes से regarding बात की जा रही है. So यहाँ पे जो missing
एरिया है, बस हम वही लेंगे। ये हम देख चुके हैं कि आरबीआई ने क्यों ये डिसीजन लिया है। क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में हम बात कर चुके हैं, कब इसको इशू किया गया, 4-5 साल हो गए हैं। इसके अलावा व्हाट इज द क्लीन नोट पॉलिसी, ये भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे क्लीन नोट द क्लीन नोट पॉलिसी इट सीक्स टू गिव public good quality currency notes and coins which are with better security features, while जो soiled notes हैं they are withdrawn out of circulation. So RBI it had earlier decided to withdraw from circulation all the banknotes which were issued prior to 2005 as they have fewer security features as compared to the banknotes printed after 2005. तो अब आपका टास्क ये है कि आपको फाइंड आउट करना है कि सिक्योरिटी फीचर्स कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी फीचर्स बैंक नोट्स में प्रेजेंट हैं। However, जो notes issue किए गए before 2005 they continue to be legal tender, but ये find out किया गया कि जो 2005 से पहले issue किए गए थे उनमें security features comparatively कम हैं जो issue किए गए after 2005. So they have only been withdrawn from circulation in conformity with the standard international practice of not having notes of multiple series in circulation at the same time. So अभी के लिए तो हमारे पास यही update है कि अभी it will be legal tender. So what will happen after 30th of September, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ as per the logic क्या होना चाहिए, but इससे regarding आरबीआई ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि आफ्टर 30th सितंबर क्या स्टेटस रहेगा। However, it has said कि its instructions on ₹2000 notes they will be effective until that date. So 30th of September तक ही जो अभी instructions आए हैं from आरबीआई वो बस 30th of September तक ही valid हैं। So you can see indirectly इसका मतलब यही हो रहा है अभी के लिए जो समझ में आ रहा है ये पढ़ के कि 30th of September के बाद it wouldn't be legal tender money. So, जैसे कि मैंने अभी प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन किया कि उसका फिर मतलब ही क्या बच गया। अभी जो हम इतने एफर्ट्स ले रहे हैं इतना टाइम जाएगा, इतनी इनकन्वीनियंस लोगों को सफर करनी पड़ेगी, एंड अगेन ब्लैक मनी को टारगेट करने के लिए डिसीजन लिया गया है। तो उसका फायदा तभी होगा जब ₹2000 नोट्स दे वुडंट बी लीगल टेंडर आफ्टर 30th of September. सो आपको क्या करना चाहिए विद ₹2000 नोट्स, एक्सचेंज कराना है और क्या है। देन इज देयर अ लिमिट की ओके डेली बेसिस पे ₹20,000 की लिमिट इम्पोज की गई है, किसी भी बैंक की ब्रांच से आप एक्सचेंज करा सकते हो। देन उसके अलावा मतलब 2016 जैसा डिमोनेटाइजेशन में जो क्योस देखा था वैसा तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि होगा, बट ये है कि लोग ही खुद एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि फिर उनको ये लगेगा कि ये बर्डन अब उनके ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो नोट तो एक्सचेंज कराना पड़ेगा बैंक में जाके। तो लोग नेचुरली इसको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे डिस्पाइट इट बीइंग अ लीगल टेंडर। सो वी आर सीइंग कि जो परमाफ्रॉस्ट है इट थॉज इट इज मेल्टिंग, वी सी कि जो बरीड टॉक्सिक वेस्ट है दैट मे बी नाउ रिलीज्ड। So in this picture, it is saying कि thawing permafrost on Herschel Island. It is located near the coast of Yukon in Canada. So जो toxic waste है that was buried since many years, now that it might be released. And उससे regarding again ऑब्वियसली कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट भी होगा, हैवी मेटल्स मिलेंगे, स्पिल्ड फ्यूल्स मिलेंगे, एंड ड्रिलिंग मड्स एंड फ्लूइड्स, माइन वेस्ट हीप्स, ये सब एक्सपोजर होगा, एंड अगेन इट वुडंट बी सेफ फॉर द ह्यूमंस। सो राइट टू असेंबली की अगर हम बात करें, सो इसके रिगार्डिंग फ्रीडम एंड क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। So let's take up that. So Andhra Pradesh High Court has set aside a government order that sought to regulate public gatherings or assembly on the roads, roadsides and margins, saying कि जो historically, culturally and politically the tradition of public meetings, processions, assemblies on streets, highways, it has been recognized in this country and it's an important facet of political life in India. So this order has been set aside by the Andhra Pradesh High Court. So जो government है वो basically in a way it was trying to regulate the public assembly.
सो हाई कोर्ट ने बोला कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, इट विटनेस न्यूमरस सत्याग्रहs ऑन रोड्स एंड इवन कंटेम्पररी आंध्र प्रदेश, इट हैज सीन मेनी प्रोसेशंस, पद यात्रास एंड असेंबलीज ऑन इट्स पब्लिक रोड्स एंड हाईवेज। सो जो ऑर्डर था उसको क्वॉश कर दिया गया। सो गवर्नमेंट ऑर्डर क्या था? स्टेट गवर्नमेंट इट कंटेंडेड बिफोर द कोर्ट की फॉलोइंग रीसेंट जो फीटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लॉस ऑफ लाइव्स इन स्टैम्पीड्स, इट हैज डिसाइडेड टू रेगुलेट द मीटिंग्स ऑन द पब्लिक रोड्स विदाउट however banning them altogether। so ये गवर्नमेंट ऑर्डर बोल रहा था कि आप सिर्फ रेगुलेट करेंगे, हम कंप्लीटली बैन नहीं कर रहे हैं। so यहाँ पे सेक्शन मेंशन्ड है कि इस पुलिस एक्ट के अंडर ये गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया गया। सो कोर्ट की जो लैंग्वेज थी, रूलिंग थी, इट सेड कि अ प्लेन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 30 शोज कि authorities they have the power to only regulate, and that an officer who believes कि assembly it may cause a breach of peace, it can ask the organizers to apply for a license and prescribe conditions for the meeting। so सिर्फ इस सिचुएशन में द मीटिंग कैन बी रेगुलेटेड। ऐसा नहीं कि आप उससे रिगार्डिंग एक प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज कर दो फॉर ऑल द मीटिंग्स। So unless you think कि there is a likelihood of a breach of peace, तब तक के लिए आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो। So right to assembly की बात करें, the cure suggested in the government order, it will impose an unreasonable restriction on the constitutional freedom of a citizen or political party to assemble and hold the meetings। So right to assemble, right to protest peacefully and to express one's opinion freely, it is too precious a freedom to be taken away by an ipse dixit or unproven assertion by an officer of the state। So this was the court judgment। So freedom of speech is the bulwark of democracy, considered to be the first in hierarchy of liberties, and it could not be left to anyone's unfettered discretion। So this was also said by the judgment। So जो fundamental right है to assemble peacefully and without arms, it is guaranteed by Article 19, Clause 1, Subclause B. It was subject to reasonable restrictions under Article 19, Clause 2, and laid down guidelines for regulating such protests and demonstrations। So that is the update। So that is all for today। Thank you so much for joining us in this video, and do like this video।